Hi everyone, this is Sushmita Ma'am, your GA mentor, and I welcome you all to the official YouTube channel of Oliveboard. स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में. Now this is the very beginning of this session and this is the first session. ठीक है, ये आज पहली क्लास होगी इस सेशन की. What is this session? ये सेशन होगा क्या? We'll be doing MCQs बेस्ड ऑन डेली करंट अफेयर्स. ठीक है, तो जो आपकी डेली करंट अफेयर्स होती है उस पे बेस्ड एमसीक्यूज होंगे. जस्ट एमसीक्यूज. व्हाई जस्ट एमसीक्यूज? इट विल हेल्प यू पीपल हाउ इन रिवाइजिंग. ओके, जब रिविजन करोगे तो आपको चीजें अच्छे से मेमोराइज होंगी. सो वी आर नाउ बिगिनिंग दिस सेशन. ओके, आज सेशन को शुरू करते हैं. यू विल गेट एन आइडिया. आपको डेली ये इसी टाइम पर सेशन मिलने वाला है. सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन. Nobel Peace Prize winner Muhammad Yunus hailed from which country who has been chosen to receive the Olympic laurel at Tokyo Games 2021? India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar or Sri Lanka? Keep on answering quickly. The answer will be Bangladesh. Okay, see. What was the question? The social entrepreneur, economist, civil society leader and Nobel Peace Prize awardee Muhammad Yunus of Bangladesh will become the second recipient of Olympic laurel. He will officially receive the trophy during the opening ceremony of Olympic Games Tokyo 2020 on 23 July 2021. Okay, तो ये जो आपका ओलंपिक गेम्स है ये ओरिजिनली 2020 में शेड्यूल था, बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक इट वाज शिफ्टेड टू 2021 where it is being held in Tokyo. Now in 2022 this will be held in which country? In Beijing. Okay, in Beijing. In 2024 it will be conducted by Paris. 2028 by LA. Okay, so all these are very important. Keep all these points in mind. ये आपसे पूछा जा सकता है क्यों ये कैंसिल नहीं हो रहा है? बिकॉज इससे बहुत सारा लॉस हो सकता है. इट विल इनकर ह्यूज लॉस फॉर द IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल. IOC is headed by Thomas Bach. These are some important points that you need to remember. ठीक है, ये कुछ important points हैं जो हमें याद रखने होंगे. Okay, now moving to the next question. The Science Exploration Day, that is the Moon Day, is observed every year on July 17th, July 18th, July 19th, July 20th or July 21st. Okay, now see. The Science Exploration Day or Moon Day is held on July 20th. Now see, Science Exploration Day, also called Moon Day, is marked every year on 20 July. It was on this day in 1969 that Neil Armstrong and Edwin Buzz Aldrin became the first humans to land on Moon's surface. Okay, so they landed on Moon. So this day is also known as Science Exploration Day or Moon Day. On 20 July only, we also celebrate Chess Day, International Chess Day. Now, one more thing that you all should remember. The very first mission will be conducted by USA. The name will be Artemis. ठीक है, USA पहली बार आर्टेमिस मिशन के थ्रू एक वुमेन को मून पर भेजेगी. ओके, याद रखिएगा इसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट भी शामिल हैं, राजा चरी. ओके, और सारी चीजें सेफ तरीके से हो और प्रॉपर एक्सप्लोरेशन सही तरीके से हो, इसके लिए अकॉर्ड बनाया है जिसपे 11 कंट्रीज ने क्या किया है? साइन किया है. रिसेंट ऐसा करने वाली कौन सी कंट्री थी? न्यूजीलैंड. नाउ आंसर में वन थिंग, क्या और कंट्रीज ने किया है क्या इस पे साइन? ओके, एनीवे दिस वाज द आंसर, मून डे. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. When is International Chess Day marked every year? July 17, July 18, July 19, July 20, July 21st. So we can also do it with one thing. What? Elimination. Okay, elimination से अभी हम देखते हैं तो दो को एलिमिनेट करते हैं, एक आइडिया लग सकता है. See, July 17 Justice Day. ठीक है, July 18th Nelson Mandela Day. The answer will be July 20th. Okay, see now. International Chess Day हर साल आपका 20 जुलाई को मनता है. Chess is a game of strategy and wits. It has long been considered to be the thinking game. It is a wonderful game to play anytime, obviously, and with almost everyone. The International Chess Day is celebrated on 20 July annually. What is the name of the Grandmaster recently who was considered as Grandmaster who hails from Goa? Can you people tell me what is his name? Another question. Which organization has been awarded with prestigious UNDP Equator Prize for their work in the field of conservation and biodiversity? Adhimalai Fazangudiniyar Producer Company, Sneha Kunj Trust, WP Society of India, both 1 and 2 or none of the above? Now the answer will be both 1 and 2. दोनों पहले और दूसरे को क्या दिया गया है? इक्वेटर प्राइज दिया गया from UNDP. See, you can see this tweet. The
two Indian communities have won prestigious Equator Prize 2021. Adhimalai, Fazungudiyar, Producer and Sneha Kunj Trust are awarded for exceptional achievement in nature-based solution for biodiversity. Okay, now moving to the next. गूगल क्लाउड हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू क्लाउड रीजन इन विच रीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो अभी गूगल क्लाउड ने कौन सी भारतीय कौन सी रीजन में नया क्लाउड रीजन शुरू किया है? दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु. एज आई टोल्ड यू कि जो क्लाउड होता है बेसिकली ये एक स्टोरेज का काम करता है. कहीं पे कुछ स्टोर है और आप लोग उसका एक्सेस लेके खुद भी वो चीज चला सकते हो. जैसे मैंने आपको पबजी का एग्जांपल दिया था, मान लो आपके फोन में नहीं है, वो कहीं और स्टोर्ड है, लेकिन आप उसका एक्सेस लेके उसे प्ले कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज गूगल. अब ये जहाँ पे स्टोर होता है उसका भी एक जगह चाहिए होता है विच इज द क्लाउड रीजन. अब ये जो क्लाउड रीजन है ये पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में 10 है और फिलहाल भारत में 2 हो गए हैं. ठीक है, आपसे पूछा है कि कहाँ पे नया क्लाउड रीजन शुरू किया गया है. सो दैट वुड बी दिल्ली एनसीआर. इट हैज बीन स्टार्टेड इन दिल्ली एनसीआर. ओके, सी Google Cloud launched its new cloud region in Delhi NCR National Capital Region to serve its customer in India and Asia Pacific. This new Google Cloud region is the second such in India after Mumbai and 10th in Asia Pacific. Another. Who is the author of the book The India Story? Urjit Patel, Shashi Tharoor, Bimal Jalan, Rajiv Kumar or Raghuram Rajan? Now see, the answer will be Bimal Jalan. Beside Urjit Patel, एक बहुत ही फेमस किताब है इनकी ओवरड्राफ्ट. ठीक है, शशि थरूर की एक बहुत फेमस किताब है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया. इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी किताबें हैं. रघुराम राजन की फॉल्ट लाइन्स, द थर्ड पिलर, आई डू व्हाट आई डू. ओके, तो ये इनकी किताबें हैं, याद रखिएगा. Now the question was the India story किसकी है? So answer will be Bimal Jalan. Okay. Now next is, अच्छा, recently Kareena Kapoor also launched one book. The name was Pregnancy Bible. Who has been appointed as the deputy leader of Rajya Sabha? Thambi Durai, Keshav Prasad Maurya, Ram Govind Chaudhary, Dinesh Sharma or Mukhtar Abbas Naqvi. See, who has been elected? Mukhtar Abbas Naqvi. He is also the Minister of Minority Affairs. He has been escalated to the position of deputy leader. And who is the leader? That would be Piyush Goyal. He was previously the deputy leader. Now he has been elevated as the leader of the house. We are talking about Rajya Sabha. Okay. So हमारी जो हमारे वहाँ पर बाई कैमरा रजिस्ट्रेशन है. ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी कि 2 हाउसेज होते हैं. जो अपर हाउस है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका राज्यसभा होता है. लोअर हाउस इज द लोकसभा. राज्यसभा की बात करते हैं तो जो पोटेंशियल सीटिंग कैपेसिटी होती है ये 250 की होती है, जिसमें से कि 238 क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं. ओके, और जब मैं आपसे बात करती हूँ 12 तो ये नॉमिनेटेड होते हैं. ओके, फिलहाल आप लोग बताइएगा कि अभी मैक्सिमम कितना है. एनीवे, चलो अब अगला देख लेते हैं. NMCG has approved new projects for the rejuvenation of 6 rivers in Uttarakhand. NMCG stands for National Mission for Clean Ganga, National Mission for Clean Gandak, National Mission for Cover Ganga, National Mission for Clean Gram Panchayat, National Mission for Clear Gandak. Okay, the answer will be National Mission for Clean Ganga. Listen. New project for rejuvenation of 6 polluted river stretches in Uttarakhand approved. The Director General, इनका नाम याद रखना, this is very important. The Director General National Mission for Clean Ganga, Shri Rajiv Ranjan Mishra, today chaired the 36th Executive Committee meeting of NMCG and approved new projects for rejuvenation of 6 polluted river stretches in Uttarakhand. Okay. What is the new nomenclature of Common High Court of UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh? ठीक है, तो जो अभी नया नाम दिया गया है जम्मू कश्मीर लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट को, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है. हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, स्पेशल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, हाई कोर्ट ऑफ रीऑर्गेनाइज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. ओके, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट का
स्टेटस था उसको हटा लिया गया था 31 अक्टूबर को। उसके बाद से जम्मू और कश्मीर दोनों एक अलग अलग क्या बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी। ये दोनों ही एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते थे। इस हाई कोर्ट का नाम बदल दिया गया है और अभी क्या हो गया, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, इसको चेंज किया गया है और हो गया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, किसने किया है इस रीऑर्गेनाइजेशन पर साइन? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। हु इज द चीफ जस्टिस? The chief justice will be Pankaj Mittal. Remember his name. Okay. Successful trial of movement of train between Jayanagar in India and Kurta in which country was undertaken in July 2021? Nepal, Bhutan, Pakistan, Myanmar, Bangladesh. The answer will be Nepal. See. In the first phase of Indian Railways Jayanagar-Bardivas rail project, recently a speed trial was completed successfully at a speed of 110 km per hour on 35 km long newly gauge converted section between Jayanagar and Kurta in the neighboring country Nepal. Capital is Kathmandu. Prime Minister Sher Bahadur Deuba. Currency Nepalese rupee and President Vidya Devi Bhandari. Okay, so this was the session for today. इफ यू लाइक इट, अगर आपको पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि यस यू पीपल लाइक इट, तो मैं समझ पाऊंगी कि मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। आपको कोई भी कमी लगती है सेशन में, यू कैन कमेंट एंड टेल मी। इफ यू वांट द पीडीएफ यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप GACA बाय सुष्मिता मैम। आई विल ऑल्सो अपलोड द पीडीएफ इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।